Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions, and we started with the year 2000. So, guys, so far we have completed till INMO 2014 completely. तो 2000 से लेके 2014 तक हमने complete solve कर लिया है. So 15 years worth of papers we have completed, and basically how many questions? Every year there are 6 questions, so 15 into 6, 90 questions. So far we have posted 90 videos for INMO flashback series, one video for each question in an orderly manner, right? You can find all those videos posted on our channel, guys. और नहीं तो आप playlist section के अंदर भी देख सकते हो. Okay, playlist भी बना हुआ है INMO flashback series के नाम से, right? So guys, we have done, as I said, 15 साल के पेपर कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट ईयर, दैट इज INMO 2015, राइट? सो INMO 2015 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. तो वो क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर है, ठीक है? तो गाइज अगेन एज ऑलवेज आई विल जस्ट आस्क यू वन थिंग. जब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो देयर, देन एंड देयर, एंड देन ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है? पहले खुद ट्राई करो. I have already told you multiple times कि क्या बेनिफिट है उसका. प्लीज पॉज इट, सॉल्व इट, गिव इट अ गुड अटेम्प्ट. हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है कोई. देन यू एनीवेज व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन you'll gain a lot from it. Okay, you'll learn a lot. You'll realize this thing later maybe, but आप करोगे, आपको फायदा होगा. So please try the question beforehand. Okay, all right. So before beginning, let me introduce myself, guys. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching since graduating for the past 9+ years for various competition exams involving mathematics like Maths Olympiads, KVPY, and IIT JEE and all. Right? Okay. तो guys start करते हैं आज का सेशन. Let us see the question that we have to solve today. Okay. तो क्वेश्चन देखते हैं. Let me scroll down. तो डायग्राम भी आज साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है? Okay, all right. So this is our question, guys. Let ABC be a right angle triangle with angle B equal to 90. तो guys मैं साथ साथ में डायग्राम बनाता जाऊंगा. You have this triangle ABC, okay? Angle B is 90 है, ठीक है? Angle B यहाँ पे आपके पास 90 है. Now they are saying let BD be the altitude on from B onto AC. Okay, so let me drop a perpendicular from B onto AC. All right. So this is the perpendicular, guys. ठीक है? ये D point आ गया आपके पास, which is perpendicular, right? Now what next step, right? BD be the altitude from B upon AC. Now what? Let P, Q and I be the incenters of the triangles ABD, okay, CBD and ABC. एक काम करते हैं, पहले I मार्क करते हैं ना. I कहाँ पे आएगा? That is the incenter of triangle ABC, right? So let me draw that, but with some other color. Okay, let me pick green color for that. All right. तो guys हमें एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए. Okay, so basically guys what I've done, these 3 points, this is I point, right? Angle bisector and sub, all these 3 green lines represent angle bisectors, right? These are angle bisectors. Respective angle bisectors हमने ड्रॉ किए, they meet at point I, ठीक है? Guys अब एक बात का ध्यान रखना, the point P, wouldn't that line lie on AI? क्यों? क्योंकि आप अगर ABD ट्राइंगल का सर्कमसेंटर ड्रॉ करने की इन सेंटर ड्रॉ करोगे, बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ द एंगल bisectors. So I'll show you one angle, such angle bisectors. Let me draw it with the blue color. Okay, तो guys देखो AI is already the angle bisector of A. Let me draw the angle bisector of angle D. ठीक है? तो यहां से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे गाइस, this is what it will look like. Can I say this, that this is point P, दो इन सेंटर जो है ऑफ ट्राइंगल ABD, बिकॉज एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी AI बना हुआ है.
एंगल ADB का मैंने ये ब्लू लाइन से ड्रॉ किया एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी P, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ एग्जैक्टली द सेम वे गाइस, दैट मीन्स क्या होगा, P पॉइंट तो AI के ऊपर लाई कर रहा है यहाँ पे भी. सेम वे फॉर ट्राइंगल BCD और CBD वट एवर इट इज गिवन है ना, उसका इन सेंटर बनाना है तो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर CI ऑलरेडी बना हुआ है. व्हाट यू नीड इज अनदर एंगल बाइसेक्टर, राइट? और या तो आप CBD का बनाओ or we can make for CDB. So for this particular case, let us draw for CDB. Doesn't matter anyways, but with this thing will actually help us, right? तो 90 डिग्री बन रहा है तो 45 डिग्री पे बनेगा, right? So this is Q, right? So this point is point Q. Okay, तो guys ये यहाँ तक डायग्राम बन गया हमारे पास. So we have identified the points P, I and Q and D. Now what does the question say? What we have to do in this question is show that the circumcenter of triangle AB PIQ, जो ये triangle PI और Q, जो ये तीन पॉइंट्स हमारे पास PI और Q, उनको ज्वाइन करने वाले जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो circumcenter है, what we have to prove is that the circumcenter of the triangle will lie on the hypotenuse AC. Okay, AC के ऊपर lie करेगा. So guys, I am going to do a very interesting proof. ठीक है, ध्यान से देखना, it will be very interesting actually. There might be multiple ways to solve this question, but the method that I found is quite, interesting and easy, rather most easiest way you will find it to be, right? तो PQI का सर्कल बनाना है और उसका सेंटर प्रूव करना है कि AC के ऊपर है, right? That is what we want to prove. Okay, let us identify one thing, guys. Let us write down some things. What will be the value of angle AIC or PIQ? Angle AIC, or which is equal to angle PIQ. How much is that? कितना होता है वो एंगल, ये वाला कितना होता है? See, we know this property that angle subtended by a side of the triangle at the in center is 90 plus the third vertical angle by 2, right? For this particular case, it will be 90 plus angle B by 2, and angle B is 90, right? So this angle is 135. Right? I hope this thing is clear. This angle is 135. Right? Now guys, you do realize that all the angles, जो ये PD line है और QD line है, that divides the angle in 45 degrees each. This angle is 45, this angle is 45, right? This is also 45 and this is also 45. चारों angle क्या है? 45 होंगे. Like angle ADP, let me write that as well. Angle ADP, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इक्वल टू एंगल PDB इज इक्वल टू एंगल BDQ इज इक्वल टू एंगल QDC. ऑल दीज एंगल्स आर 45 डिग्रीज ईच. 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो क्योंकि आप, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90, राइट? तो ये चारों एंगल 90 45 ईच है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो, राइट? Now guys, I am going to do a simple construction and you'll see the question will be over after this. So let us do a construction here. What is the construction? Draw perpendicular from P, okay, onto AC, and let it intersect QD extended at R. Let it intersect QD extended at point R, at R. आप ऐसे कह सकते हो, राइट? सो क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है? ओके, वो ड्रॉ कर रहा हूं मैं. आई विल डू दैट कंस्ट्रक्शन विद रेड कलर, ओके, सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. सो P पॉइंट से गाइज एक तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? वी आर ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम P अपॉन AC and we are letting it intersect QD extended at R. ओके, तो QD को एक्सटेंड किया हमने and this is what you can see it here guys. Okay, all right, you can see here QD को एक्सटेंड किया, it is intersecting perpendicular from P at R. P से perpendicular ड्रॉप किया हमने गाइस, like this. ठीक है,
So PR is perpendicular to AC, right? And we are extending QD to intersect that line at R. ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो गया. P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AC के ऊपर and QD को एक्सटेंड किया. It is intersecting it to at some point they will intersect, and that point is, let's say, R. Now guys, let us understand. Can I say PR is parallel to BD? Right? Both are perpendicular to AC. Right? That PR is parallel to BD. Okay. The reason, as both are perpendicular to AC. Right? Both are perpendicular to AC, so both lines will be parallel. Now, QD is a transversal. These two are parallel lines. So can I say that angle PRD is same as BDQ? So angle PRD is same as angle BDQ, and which we have already found to be 45. Right? Now, very interesting observation, guys. Let me mark this. This angle is how much? 45. Right? This angle is 45 degrees. Now, what is this observation, guys? See, QR is a straight line, है ना? QD को extend ही तो किया है बस. QR is a straight line, है ना? PRQI, it is forming a kind of quadrilateral whose opposite angles are 180. You can see here, right? Since angle PRD plus angle PIQ plus angle PIQ is equal to 180 degrees, right? The sum of these two angles is 180, 45 plus 135 hai, right? We can say that PRQI are concyclic, right? The points PRQI are concyclic. That means ये चारों points एक circle के ऊपर lie करेंगे, right? All the four points will lie on a circle, and we are interested in finding the center of that circle only because PQI are lying on that circle, right? PRQI are the 4 points which are concyclic. तो PQI उसी एक circle के ऊपर lie करते हैं, right? So I am interested in finding the center of that circle which is passing through PRQ and I. Correct? I hope यहाँ तक सबको logic समझ में आ गया. Let me see if I can try to draw a circle, right? Something of this sort, guys. जो red circle मैंने draw कर दिया है, that is the circle और circumcircle of P, R, Q and I, right? Concyclic है, उनका circle भी मैंने draw करके दिखा दिया आपको. Now what we need to prove is that the center of that circle will lie on AC. That's it. And very interestingly, we can prove that as well. कैसे? तो guys, let me show you triangle RPD. See, हमें क्या पता है, center अगर आपके पास एक cyclic quadrilateral है और उसका जो circumcircle है, अगर आपको उसका center find करना है, wouldn't its center pass through the perpendicular bisector of any side, है ना? अगर आप chord PR पिक करते हो for the cyclic quadrilateral, उसके perpendicular bisector के ऊपर lie करना चाहिए ना center, because the center is equidistant from PR and R both, right? That is the meaning of circumcenter. Whatever is the circumcenter should be equidistant from P and R. So I can say the circumcenter of PRIQ or PIQR, okay, it is as good as triangle का निकाल लो, PIQ का बोल दो, चाहे तो PIQR का बोल दो, है ना? PIQR should lie on perpendicular bisector of PR, right? PR के perpendicular bisector के ऊपर lie करना चाहिए, right? Now all I have left to prove is that AC is the perpendicular bisector of PR, है ना? इसका मतलब AC के ऊपर lie करेगा, and that is quite easy. How? Because you see, ये वाला angle 45 है, angle PDA is 45, RDA is also 45. Let me show you angle
PDA, बिकॉज एंगल बाई सेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो, एंगल PDA इज इक्वल टू एंगल RDA इक्वल टू 45। PDA तो हमें पहले से ही पता था, राइट, दैट इज ADP, है ना, एंड एंगल RDA बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, because angle RDA is same as CDQ, right, because this particular angle is anyways equal to angle CDQ, right, दोनों 45 हैं। तो you can understand for the triangle PRD, जो लाइन है AC वाली लाइन है, that is angle bisector of angle D as well as altitude for triangle, right, तो perpendicular bisector हो गया, right, because that is actually an isosceles triangle, DP will be equal to DR now, right, we can conclude that thing as well। तो जो DA लाइन है जो PR को इंटरसेक्ट कर रही है, that is median, altitude, angle bisector as well, everything, right, ये हमने बहुत बार किया हुआ है। और अदर वे अराउंड, लेट मी नेम इट सम वे, इस पॉइंट को नाम एक दे देते हैं, PDRS मान लेते हैं, इफ यू name it point S, है ना, PR is intersecting AC at S, you can easily also prove that triangle PSD is congruent to triangle RSD, आप ये भी बोल सकते हो। और further I can try to prove, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे इतने से भी आपको क्या मिल जाएगा, that DS is altitude as well as angle bisector, which will imply DS is median as well, ठीक है, वो हम कर ही सकते हैं। तो DS is perpendicular bisector, यहां से प्रूव हो जाएगा, this implies AC is perpendicular bisector of PR, right, अपना काम हो गया, this is one way। और you can do one more thing, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड पे, और you can basically prove, okay, or you can basically prove that triangle PSD is congruent to triangle RSD, ओके, यूजिंग व्हाट क्राइटेरिया, 90 डिग्री है एक एंगल, दोनों एंगल इक्वल है और एक साइड SD कॉमन है, सो यूजिंग ASA क्राइटेरिया, राइट, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस यू कैन से दैट PS इज इक्वल टू SR, और वो 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, विच इंप्लाइज AC और SD और AC is perpendicular bisector of PR, and finally what does that prove, मैंने आपको पहले भी बोला था हमें यही प्रूव करना है कि circumcenter of triangle, circumcenter of PIQR should lie on perpendicular bisector of PR, और हमने वो प्रूव कर दिया, है ना। now AC is that perpendicular bisector and उसके ऊपर circumcenter lie कर रहा है, finally we are able to say it implies, देखो PIQR का circumcenter is same as circumcenter of PIQ, that implies circumcenter of triangle PIQ lies on AC, right, and that is what we had to prove। so guys, आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया एक्चुअली। I was just emphasizing on the later part, but the thing was it was quite easy if you just figure out this thing, that if you extend QD, which do a simple construction, extend QD and drop a perpendicular from P upon AC, they are intersecting at point R, the 4 points now P, I, Q and R are concyclic. That is the most interesting thing, just by observing the angles itself, and once you prove that they are concyclic, and it becomes easier then कि वो जो circle का center it should lie on perpendicular bisector of any of the side of the quadrilateral PIQR, और PR का perpendicular bisector is AC, and that made it easy, right? So guys, I hope आप सबको मजा आया इस क्वेश्चन में, you got to learn something from this, है ना। and I am saying one more thing, इसके अंदर guys, it's not necessary that this is the only method, there might be other ways as well। I would like to say that guys, you should try to try this question by some other ways as well, explore करो और methods को,
अगर नहीं भी होगा, you might get some good insights about this question as well, which might be useful in some question that you might face in IUCAM actually, INMO actually, right, this year. So have a try. और इस मेथड से करने के बाद सोचो थोड़ा और, ट्राई टू थिंक सम अदर वेज टू गेट टू दैट पॉइंट अगेन, ठीक है, क्योंकि आपको एक मेथड का आइडिया तो लग ही गया है, राइट. So that is it, guys. This was the first question of INMO 2015. So we started the first question. Okay. In the next video, we'll be coming back with the second question of INMO 2015. Okay. So guys, if you please like this video and understood this thing, learned something, please like this video and subscribe to our channel so we can keep coming up with such questions. Okay. So we'll see you in the next video, guys. Till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye-bye. Good night.